A very lovely good afternoon, my dear students. So, after summer vacation, we are back again, and this is your English class. So, I think you all have gone through your revised syllabus. I have uploaded it, and you can also download the same from the CPSE site. And there are a few chapters which have been deleted this year, and so please keep it in mind that which chapters you need to read and which chapters you don't need to read this year. Moreover, in the marking scheme also they have made lots of changes, so I'll ask you all to go through that very carefully. Now in today's class, today we'll be doing this poem. The name of the poem is Keeping Quiet. Clear? And the poet is Pablo Neruda. So actually this poet Pablo Neruda, it was his pen name. Clear? And his real name was Neftali Ricardo Reis Bastello. Clear? So pen name, let me make you clear what do you mean by pen name. Actually, pen name is the name by which you became popular in a writing field. Your real name is something else, but you are known to the mass, you are known to the people by any other name. Clear? So that particular name by which you are famous is known as pen name. So here Pablo Neruda was his pen name, and this particular poet, he was very well known by his pen name, that is Pablo Neruda. Clear? Now coming to this poem, what this poem is all about. So before we go into the poem, let me tell you one more thing about Pablo Neruda is that he also won Nobel Prize for Literature in 1971. Yeah? So he was also awarded the Nobel Prize for Literature, yeah, in 1971. Now here in this poem, Keeping Quiet, I think you all know the meaning of the word keeping quiet means शांत रहना. Clear? Quiet means to be silent. Clear? Now here in this poem, Keeping Quiet, the poet Pablo Neruda, he talks about two basic necessities of today's life, that is of modern life. Clear? That is necessity of quiet introspection. Clear? Necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Now here in this poem, the poet Pablo Neruda, he talks about two things: keeping quiet. Clear? In this poem, the poet basically talks about two things. What are the two things? That is mutual understanding, mutual understanding and necessity of deep introspection. Clear? So let me first make you clear what is the meaning of these two words and why, what is the message that is contained in this poem Keeping Quiet. Actually here the poet Pablo Neruda, he says that in today's world, आजकल की जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो वर्ल्ड हो चुका है, it is full of rush. We don't have time to introspect ourselves so that we can create a feeling of mutual understanding. Actually आज जो हमारा लाइफ है वो बहुत रश का है, बहुत भगदड़ सी मची हुई है हमारी लाइफ में. We don't have time to realize, to analyze something. Clear? हम सब जल्दी में है, सबको एक भगदड़ सी मची है, एक रेस सी मची है. लाइफ इज़ अ रेस. लाइफ हैज़ बिकम अ रेस फॉर अस. वी कैनॉट एन्जॉय आवर लाइफ. हम अपने लाइफ को एन्जॉय तक नहीं कर पाते हैं. किसी को पैसे कमाने का रेस लगा हुआ है, किसी को पढ़ाई करने की रेस लगी है, किसी को अपने लाइफ में अपने सपने
को अचीव करने का रेस लगा हुआ है। दैट मीन्स इन शॉर्ट आवर लाइफ इज़ अ रेस, क्लियर, वो एक रेस की तरह हो चुका है और हम लोग सब भगदड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। नाउ इसकी वजह से नाउ हमारे प्रेजेंट लाइफ में अभी हुआ क्या है कि वी हैव लॉस्ट दिस डीप इंट्रोस्पेक्शन। डीप इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है गहरी चिंतन। आज के जीवन में, आज के लाइफ स्टाइल में हम लोग कोई टॉपिक पे, कोई बात पे चिंतन नहीं करते। वी डू नॉट इंट्रोस्पेक्ट। हम ये नहीं समझते कि किसी ने अगर मुझसे कुछ आज गलत बात कहा है तो क्यों कहा है, किसी ने आज मुझे अच्छा बात कहा है तो क्यों कहा है। वी डोंट हैव टाइम टू रियलाइज दिस, क्लियर। बस एक भगदड़ सी मची है, बस हम तुरंत अच्छा वो हमको ये बात बोला, चलो लाठी निकालो, चलो लड़ाई करते हैं। क्यों बोलिए, किस लिए बोलिए। मीन्स हम खुद 5 मिनट बैठ के कभी ये नहीं सोचते कि आज हमको क्लास में अगर डांट पड़ी है, टीचर ने डांटा है तो क्यों डांटा है। नहीं, ये सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्लियर। क्यों? क्योंकि हम रेस में लगे हुए हैं। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब हम चिंतन करने का हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस? द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज देयर इज़ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नाउ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होने की वजह से होता क्या है, आज के हमारे लाइफ में हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। एक बेटा अपनी बाप की बात को नहीं समझ पाता, फादर अपने बेटे के बात को नहीं समझ पाते। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग जनरेशन गैप का नाम देते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ जनरेशन गैप, रादर दिस इज़ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आज के लाइफ में हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से सारे रिलेशंस धरे के धरे रह जाते हैं, खटास आ जाती है हमारे रिलेशनशिप्स में। वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और जिसकी वजह से बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ जाती है, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे इस पोएम में कीपिंग क्वाइट में पाब्लो नेरुदा हमसे कहते हैं कि वी मस्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारी रस्टिक ये भरी लाइफ में, हमारा जो ये रश भरा लाइफ है, इस रस्टिक लाइफ में से कुछ वक्त निकाल के हम लोग कोने में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करें, चिंतन करें कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, वेयर वी आर, व्हाई वी आर हेयर। ये सब बातों पे हम लोग सोचें, चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद क्या होगा, वी विल बी एबल टू क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग आपस में एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, और इससे हमारा लाइफ और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पोएम। नाउ कम टू द पोएम।